बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं अबाउट गिविंग क्लासेस वेरी फ्रीक्वेंटली. And now I have this setup. I thought I might as well start giving classes and tips and tricks. Not classes, but share my knowledge. Or I've had a wonderful journey. I'm totally self-taught. मैंने जो कुछ भी सीखा बुक्स पढ़ के, हैंड्स ऑन, यूट्यूब ट्यूटोरियल. उस ज़माने में इतने नहीं होते थे. I mean that's not like ages ago, but even start जब मैंने की 2006 और 7 में, तब इतनी रिसोर्सेज नहीं थी. अब तो खैर बहुत सारी हो गई हैं. लेकिन आई वांट टू शेयर माय पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने खुद ग्लीन किए आफ्टर years and years of practicing, learning how to light की क्वालिटी और lenses के characteristics. तो आपको मैं आज lenses के बारे में थोड़ा बताने लगा हूँ. Lenses can be very expensive or they can be dirt cheap. और देखने में आपको वो एक ही जैसे लगते हैं ऑलमोस्ट. आई मीन मोर और लेस, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट लाइका और हैज़लब्लैड. बट द स्पेक्स दे मैटर. जैसे एक गाड़ी है, एक ऑल्टो है, वो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है. इसी तरह फरारी भी है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, लेकिन उसके अपने स्पेक्स हैं. और रोल्स रॉयस भी हैं तीनों गाड़ियां, लेकिन तीनों का पर्पस और है, उनका कैरेक्टरिस्टिक और है, और उनका फ्लेवर और है. इसी तरह लेंसेज में भी होता है. लेंसेज के अंदर दो टाइप के लेंसेज होते हैं. एक होते हैं जूम लेंसेज. अच्छा, जूम से पहले मैं आपको आई वांट टू शेयर विद यू फोकल लेंथ. सो लेंस के दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक फोकल लेंथ और एक उसका एपर्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ये है कि आप कितना वाइड आपको व्यू दिखा रहा है. सो वाइड एंगल लेंस में ये है कि फील्ड ऑफ व्यू जो है ना बहुत वाइड होती है. आपने शॉट्स देखे होंगे लैंडस्केप के जिसमें पूरी माउंटेन्स और वो सारा streams और सारा एक व्यू आता है. Those are normally taken with a wide angle lens. Normally, I mean you can still use a telephoto lens for a landscape. लेकिन आप फील्ड ऑफ व्यू, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कैमरे के सामने और एक सर्टेन व्यू आ रहा है, ये माइक आ रहा है एंड ये टेबल का इतना पोर्शन आ रहा है. ना इफ यू वर यूजिंग अ वाइड एंगल लेंस तो उसमें सब कुछ आ रहा होगा. मेरे राइट पे जो, लेफ्ट पे जो टेबल है, जो लाइट है, जो लाइट का स्टैंड है. सो ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है. सो नॉर्मली फोकल लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 8 mm which is very very wide. 8 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm. So फ्रॉम अ वेडिंग पर्सपेक्टिव जब आप स्टेज की पिक्चर ले रहे हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, तो देन यू आर नॉर्मली यूजिंग 24 mm लेंस. 24 mm इज द फोकल लेंथ. और व्हेन यू आर टेकिंग पिक्चर ऑफ अ लायन इन अ सफारी, देन यू यूजिंग अ 600 mm लेंस व्हिच इज अ टेलीफोटो लेंस. तो ये इनकी इस फ्रॉम वेरी वाइड टू वेरी टेलीफोटो के बीच के अंदर एक रेंज है जिसमें पोर्ट्रेट लेंसेज भी आते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंसेज, ये सारे होते हैं. तो अगेन लेंस के जो दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक होती है फोकल लेंथ और दूसरा होता है एपर्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एपर्चर. हर लेंस के बीच में एक आइरिस होता है. सो व्हेन यू लुक थ्रू दिस लेंस, आपको इसके अंदर एक होल नजर आएगा. Now that whole size can be manipulated. I don't know आपको वहाँ से नज़र आ रहा है, but I'll try to give a close up. That whole size can be manipulated. वो छोटा या बड़ा होता है according to the need. There's a dial, एक aperture ring होता है, उससे आप उस होल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. That is also called an f-stop. Now, it goes from 1.2 बल्कि 0.95 to 1, 1.24 to 2.84. जैसे जैसे f नंबर बड़ा होता जा रहा है, होल लेंस का छोटा होता जा रहा है. इसे बोलते हैं एपर्चर और f stop. Now, जितना बड़ा होल होगा लेंस का, उतनी उसकी लाइट सकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है. एंड द मोर एक्सपेंसिव द लेंस. सो if you look at the low light pictures without using a flash, शाम में, evening में, वो they are taken with an f1.2 या f2 या 2.8 lens, aperture lens के साथ. Now this lens goes from, it's a Minolta, it's a legacy lens, Minolta का है.
and it goes from 1.2 all the way till f16. So this is built as a low light lens, and its key focal length is 58 mm. So 58 mm is the focal length, and f1.2 is the aperture or the maximum opening that this lens has. And ये जिस कैटेगरी में आती है, these are the uber expensive or luxurious, आप अगर कहना चाहें, low light lenses which are built for candid pictures without using a flash. Agar, let's say in modern day terms, if this lens cost $1,000, let's assume, so इसी focal length का lens, 58 mm focal length का lens f4, which is like 3-4 times less light sensitive, is gonna cost you $100. So 10 times cost बढ़ जाती है if the bigger the aperture. I mean, there's only so much I can explain on a YouTube lecture. That's why they say photography is a hands-on art. You need to hold things in your hand, you need to experiment, you need to take pictures to actually get the flavor. So a 58 mm lens f1.2 is a very fast lens. We call it fast because it has more light gathering capability, and we photographers love low light lenses because photography means light, photo means light, and you want to make sure that the light gathering capability is the maximum because you don't want to increase the ISO of the camera. Okay, that's for another day. That discussion is for another day. So a 58 mm focal length, f1.2. Now let's go to my favorite lens, which is huge chunk of glass. This is an 85 mm f1.2 lens. This is my go-to lens for when जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरी pictures dreamy look होती थी, एक पीछे background smooth crisp creamy blur background होता था. So this was the lens. इसकी focal length इससे ज़्यादा है. So this lens zooms in more. It doesn't zoom, but it gives you a tighter view. So अगर we were using this lens, then you probably see just my face and not even this mic or this mic. So, but this is an ideal portrait lens, a low light portrait lens. So this is a 58 mm f1.2. This is an 85 mm f1.2. और ये lens I think is for $2,500. और यही focal length 85 अगर आप f1.8 लें तो that comes down to $500 or something. So इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है. So इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि दुनिया में 100 मीटर डैश 11 सेकंड में करने वाले हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लाखों नहीं तो हज़ारों लोग होंगे जो 100 मीटर डैश स्प्रिंट 11 सेकंड्स में कर देते. लेकिन अंडर 10 करने वाले दुनिया में चंद गिनती के चंद लोग होंगे, मे बी 100 मे बी 200 लोग. इससे एक सेकंड के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है. इसी तरह f1.8 से f1.2 जाने में लेंस की प्राइस, कलर, रेंडिशन और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगा. उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. सो फोटोग्राफी गियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट. लेकिन इफ़ यू हैव चीपर ऑप्शंस, लेकिन वी एज अ प्रोफेशनल वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. वी हैव टू गेट द बेस्ट गियर to deliver the best results, as you see in our pictures and albums. So and also this is a prime lens, this is a prime lens. Prime lens वो होता है which does not have the zoom capability. If I'm sitting here और मेरे हाथ में camera and I want to zoom in on anybody, like lens camera, phone cameras में zoom होता है, this doesn't let you do that. आपको खुद आगे पीछे होना होता है, because this is built for a certain purpose and it excels at that. Contrary to that, this is a zoom lens. Now this is 24 mm to 105 mm. So it zooms in from 20. So when I extend it, now it's at 24 mm. It's getting the whole view, wide view of the stage or the landscape. And if I want to zoom in, it goes to 105 mm. But the downside is कि जो इसका maximum aperture है वो f4 तक रहता है. It doesn't come down to f1.2.
Now you might wonder कि जब इसमें वही फोकस इस 24 से 105 में 58 mm की भी focal length है, 85 mm की भी focal length है, तो then why do you need these two lenses when you have that? The reason is that this is a zoom lens. This is like one size की जुराब that fits everybody. So nobody's really comfortable. These are special custom, not custom built lenses, but they are designed for a certain purpose and they excel at that. इसके मुकाबले में this is probably 6 times more light sensitive and so is the other one. And 6 times light matters a lot. अगर आप शाम के वक्त डस्क पे you want to take beautiful dreamy pictures, ये लेंस आपके काम नहीं आएगा, ये लेंस काम आएंगे. लेकिन अगर आपके पास जगह कम है और you can't move आगे पीछे and you want to capture the wide view and a zoomed in view in good light, अच्छी लाइट में, तो ये लेंस आपके काम आएगा. So we have prime lenses, we have zoom lenses, we have telephoto which is like for zooming in landscape bird photography में, and then we also have tilt shift lenses. जैसे ये एक tilt shift lens है, इसके बारे में मैं next lecture में आपको बताऊंगा because वो discussion ज़्यादा detail हो जाएगी. So again, if you're buying a lens, you need to look at two things: the aperture and the focal length. Focal length से मुराद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. If I'm going to the fort to do photography और उस पे I pack in a telephoto lens, that doesn't serve the purpose. I want to show the characteristics of the character of the buildings and I need a relatively wide lens instead of a telephoto lens. And if I take an f4 lens जो इतना light sensitive नहीं है, तो फिर उसका फायदा भी नहीं है because you don't want to use too much flash. तो when you're buying lenses, look at the specs. जब मैंने पहली अपनी purchase की थी, I was totally blank. मुझे कुछ idea नहीं था मैं क्या खरीद रहा हूँ. So when you're going for shopping for lenses, make sure you know the focal length and make sure you know the aperture. So that will decide more than the focal length. The aperture will decide the cost of the lens. So inshallah, stay tuned guys. I'll keep on sharing more tips and tricks or try to spread the knowledge as much as I can. Take care.